But Me Too was a very powerful movement because it was leader. You went viral during that time. Yeah, so it's very important when this article was published in The Conversation in UK, it went to many places. There was this leader, some MP थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक पोस्ट डाला, उन्होंने कोई कमेंट किया कि मैं एयरप्लेन में बैठा हुआ था और मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, उसने फटी जीन्स पहनी हुई थी और बूट्स पहने हुए थे. वो बहुत लोग बुराई करने लगे होंगे. In the evening, I posted a photo of mine. I said, "What's up with jeans?" And that became viral. Everybody, every single body, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस में, every single woman, they were posting their photographs on wearing a ripped jeans, stating that this is like women empowerment. This is what the power of social media is. All right, hi everyone, welcome on board. Hope you guys are doing absolutely fine. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राखी त्रिपाठी मैम के साथ. Hi मैम, welcome on board. Thank you. I'm in Ford School of Business और आज हम मैम के साथ गुफ्तगू करेंगे. मैम is a teacher and she teaches digital technologies. मैम पढ़ चुके हैं IIT दिल्ली, मैम PhD. जी. और उसके पहले MS from Maryland University. This is so amazing. I'm humbled to have you on board. Thank you so much. क्या बात है मैम. Nice of you. Today we're going to talk about some social issues what she has been trying to solve. Though being a professor of all these digital tech, innovation and teaching all these in the classrooms, you have a slight bent of mind. I would not call it a creative bent of mind, but एक दृढ़ निश्चय to do something really good for society. You worked on the Me Too movement as well, right? जी. मैम वो बताइए आज हमारे मैम 21-22-year-old audience है who are listening to us. Hi. What all you've done? Honestly speaking, let me just start from the introduction itself. We're talking about digital technologies. My focus area, because that's my expertise. So I work as a digital technology expert to solve the societal issues to my extent. I mean, to how much I can do. For an example, right? For an example, जब Me Too movement चला, तो Me Too movement सबसे पहली चीज Me Too movement की, it was a leaderless movement. There was no leader. What was the leader? The public was the leader. The voice of the public was the leader. They were talking on social media. They were writing their stories. People were encouraging them to write. People were supporting them. So there was a support and there was a voice, correct? This is where Me Too movement, I usually talk like at a hashtag Me Too movement. It was hashtag. Hashtag means that you're on social media when there's a trend going on and you start talking about it, or that you try to search it, or you try to research it, or you want whatever you want doing. So then what we did, we started extracting those voices from the social media and try to understand that where is it going? ये फेवर में जा रहा है, क्या अगेंस्ट जा रहा है, या ये सुपरफिशियल है, या क्या है? So when you look at it, सबको ऐसा लग रहा था it is something, it is something viral और लोगों को ले डूबेगा. To an extent it was correct, but it is equally important कि इसमें कौन लोग हैं जो अपनी वॉइस उठा रहे हैं. क्या वो एक गली की, छोटी सी गली की कोने की कोई बच्ची है जो एक बहुत छोटे से घर में रहती है, क्या वो अपनी बात रख पा रही है? नंबर 1. या फिर कोई एक सेलिब्रिटी है जिसका बहुत बड़ा करियर है and she has a brilliant career and she is putting her foot down and coming up and saying, this is what has happened to me, and people are supporting her or not. And the support is what kind of. Then there's a gender issue coming up, there's a power issue coming up, there's an age issue coming up, there's faceless and face issue coming up. So then we started doing a research on it. And we Explain, ma'am, like faceless issue, face issue, what is that? Faceless ही होते हैं, for example, जो parody account होते हैं, जो bots होते हैं. वो लोग अगर नेगेटिव ट्वीट कर रहे हैं या नेगेटिवली लिख रहे हैं या वो पॉजिटिव लिख रहे हैं तो उनको आप हटा देते हैं. अच्छा. You don't. एक होता है जैसे very common is like a blue tick. Blue tick is something that is valid. That is considered valid. अगर blue tick नहीं भी है, आपका प्रोफाइल नाम है, आपका एक आइडेंटिटी है, आपने एक फोन नंबर दे रखा है, that is still valuable. Then you understand that what kind of an engagement that this particular account is getting. So then you really need to get into the words. You need to really get into the numbers. You just can't come to a conclusion. I'll give a very small example of social listening is, हमारे elections आने वाले हैं अभी. जी. हम अगर social listening कर रहे हैं, लोग कहेंगे सारा का सारा जो बहाव है वो जा रहा है किसी एक particular party को. जी. लेकिन जब हमने उसको dissect किया तो हमने देखा, अरे ये तो ज़्यादातर लोग जो इसके फेवर में बोल रहे हैं, वो तो विदेश में बैठे हैं, वो they are not supposed to vote. या फिर वो 17 साल से नीचे हैं, वो वोट नहीं कर सकते. Oh, nice. So but then we cannot say. So then you have to get at least 3 level down to understand what they're doing. This is the same thing happened with Me Too.
But Me Too was a very powerful Yeah. movement because it was leader. You went viral during that time. You were- yeah. Yeah, so it's very important when this article was published in The Conversation in UK, it went to many places. Great. It had a very good reach, very good response, because people were looking at कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई movement. The same thing happened a couple of years back in Egypt also. That was also leaderless. But then after that, these movements which were on social media, they became a leaderless. So yeah, I really like it. The concept called leaderless. So nobody's the leader, but there's a movement which is going on. Yeah, of course. कोई This is leader what नहीं है. कोई लीडर नहीं है इसमें. किसी ने बनाया होगा, like hashtag किसी एक बंदे ने बोला होगा, 2-3 लोगों ने आप amplify इसकी किया बात होगा. कर रहे हैं. There was this leader, his some MP थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक पोस्ट डाला, उन्होंने कोई कमेंट किया कि मैं एयरप्लेन में बैठा हुआ था और मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, उसने फटी जीन्स पहनी हुई थी और बूट्स पहने हुए थे. वो बहुत लोग बुराई करने लगे होंगे. In the evening, I posted a photo of mine. I said, "What's up, ripped jeans?" And that became viral. Everybody, every single body, all, चाहे वो BJP की हो, चाहे वो कांग्रेस की, every single woman, they were posting their photographs on wearing a ripped jeans, stating that this is like women empowerment. This is what the power of social media is. This is what the power of digital platform is, when a very single individual who has no identity apart from their 9 to 5 job or whatever, they come up and they share the reviews. Great, ma'am. Great. Ma'am, what else kind of social issues you think can be resolved with technology? And maybe you and your team and your students at 4, they can combine together, join hands, kuch ideas. One of the biggest thing that I'm really working on right now is the blended education system. बहुत लोग बुराई करते हैं online education system की. Yeah, yeah. For me, online education system is very powerful. Number one, I agree infrastructure is one of the biggest issues when it comes to, you need a phone. But अगर आपके पास phone है, this I did in a गांव called Piprai, which is in Bundelkhand in UP. So Corona times, That's your father's That's my father's, yeah. area, yeah. No, but then we never go there. I mean, it's been like 60 years my father left that place. Oh, okay. So, Okay, but then it's like my dada's Pushtani jagah. Pushtani jagah. जी, जी. So then I started working there. So then when I went during the Corona times, so the movement was completely gone. So they were close to 50-60 girls who were supposed to go to गाँव है तो higher education तो है नहीं, so they have to go all the way 30-40 kilometers away. Trains नहीं है, public transportation नहीं है, so how are you going to do? So then what I did, I was like, you can't do a one-on-one class. So with whatever phone that you have, I started sending them links, I started sending them videos. Nice. So this is where we can do a lot of things. A lot of things. Not only this, there were a lot of dropouts. बच्चियाँ जो स्टिचिंग करती हैं या बाल काट लेती हैं, कुछ कर लेती हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया. एक छोटा सा एक नेटवर्क आई क्रिएटेड कि भैया अगर कोई बना रहा है तो तुम इसको अपने व्हाट्सएप पे डाल दो, तो 20 गाँव को हम इकट्ठा कर लेंगे कि आप यहाँ से वो ले लीजिए कर. सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस आल्सो. Okay. So, and which is, there's no cost to it. You're just paying the normal cost. So hyper local marketplace for skilled people, maybe. Exactly. Yeah. Yeah. Okay. These are the best. Only for women? I'm just curious. I was more interested in मैम, why you're only women यार? थोड़ा मैम मर्दों की भी जरूरत चाहिए. मेरी पढ़ती मर्दों से लेके मैं करती काम लड़कियों के लिए. Okay. Let me put it that way. I've been hearing that a lot. One of my friends, he was going through a tough time. I mean, he had trouble in his family, and then he was like, यार मेरी ex ने मेरे पे कुछ कर दिया है, and he was in the court sitting down there, and suddenly a guy came to him and he said, he was a Punjabi, भरोसा रखी. I represent the men's NGO. I was like, what? ये भी हो रहा है इंडिया में? ये भी हो रहा है. Men Too भी तो आया था जब Me Too चल रहा था. Men Too भी आया था क्या? Hashtag Men Too. Hashtag Men Too भी था. देखिए उसमें I just have one thing. I mean, above the gender there is human. Number one is human. Then you be a man or a woman. देखिए basic principles तो दोनों के same ही होते हैं. But society is more inclined towards man. We can't deny this fact. मेरा एक बहुत दिल कर रहा है कुछ बोलने का मैम, पर पता नहीं आपके सामने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. But I personally feel, just understand it, listen me out before you feel like of course. No. I listen to this all the time. You tell me. Before you feel like punching my face. So मुझे लगता है कि मैम, yes, women need empowerment, right? There are two Indias. One India is like Delhi, Bombay,
बैंगलोर, हाँ, कैलकाटा एक एंड हमारा वन इंडिया इज interior है। रियल इंडिया, राइट? ठीक है, दोनों अलग है मैम। हाँ हाँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, व्हेन दे कम टू इंडिया दे लाइक, ओ वी सॉ इंडिया, वी वेंट बॉम्बे, चिल। मैं तो इंडिया देखा ही नहीं भाई, हाँ बॉम्बे देख के चला गया यार। हाँ तूने भी बनारस देखा ही नहीं है। हाँ। खड़े हो जा वहां, तेरे कान में पौ 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 करके तेरे क्या होगा, तेरा हाल तेरे को पता है। अरे बंदर उठा के ले जाएंगे, आपका बंदर उठा सामान के सामान ले ले जाएंगे, and you've not seen the real India, you've not हाँ, seen the culture. No, it's beautiful. I'm just saying the other thing that हाँ way. हाँ हाँ So coming back to the women case, I personally feel women is trying to raise the voice, which is required. Women is trying to raise the voice when it comes to education, vote, when it comes to her own say, उनको घर से बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है, वो सब बढ़िया है. It's required. I'm sold on that. ठीक है. ठीक है। वो चूल्हा क्या होता है? चूल्हा ही होता है, चूल्हा चक्का। चूल्हा चक्का से बाहर जाना है. But at the same time, women is trying to compete with men. मुझे लगता है, hear me out. Ma'am is like fisting her punch. So मुझे लगता है, women is beautiful, right? Like there are emotions to this context. Like my mom makes amazing parathas. हाँ When I go home to Punjab, घर जाके मम्मी के हाथ के पराठे. It's not like dad के हाथ के पराठे. So if my mom did a full-time job for a couple of years, and then she quit, and then she was a teacher, blah blah blah. She did 6 hours every day, कुछ तो किया. But my mom is an excellent cook. My dad is not. मुझे कभी लगता है कि वो जो मदरनेस होती है, वो तो नहीं चली जाएगी when women start working, when she start competing. बहुत गलत ये सिस्टम। पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, जी. अ स्ट्रॉन्ग वुमन डजंट मीन कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी और मैं सबको मुक्के मारूंगी, ऐसा नहीं होता। माय मॉम इज 50 kgs, वेरी क्वाइट वुमन, वेरी क्वाइट। मतलब अगर कोई पापा और मेरी मॉम को देखेगा, उसको लगेगा कि ये डोमिनेट यही करते हैं, त्रिपाठी सर करते हैं। बट शी इज द पिलर ऑफ द हाउस बिकॉज शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नो कि नहीं, ये घर में नहीं हो पाएगा, सॉरी। She has no attitude. Please understand the difference between the two. You're mixing the attitude, you're mixing the culture with women empowerment. Don't do that. I might look like a very confident, arrogant, बदतमीज औरत. I might be very weak. मैं मतलब अपने करियर के लिए I might do, कुछ भी इधर उधर. I might not be ethical. Try to understand the difference between the two. और जहाँ तक हमने कुकिंग की बात की ना, my husband is a way better cook than me. Yeah. लेकिन कसम खुदा की आज तक एक चीज बना के नहीं खिलाई कि कुछ बना के खिला दिया। किचन बर्बाद करानी हो तो चले जाओ अंदर, otherwise please. I mean, he's a great cook. I mean, when my children they want to enjoy or baking or cooking or whatever, they always walk in with my husband only, not with me. Got it. Okay, coming back, ma'am, what's your take on technology helping India in the different societal issues right now, infrastructure? Or... We are way back, to be honest. देखिए, so हमारे इंडिया में there's a thing, I mean, there's a huge range. जो हमें सबसे पहली चीज जो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ, if this is going on, the definition of development is not the highest point. The development is of the definition of development is where is the lowest point. अगर टेक्नोलॉजी इसके बाद नहीं पहुंची तो हम डेवलप्ड नहीं हैं। अगर एक बहुत बड़े सेक्शन के पास नहीं पहुंचे तो हम बिल्कुल नहीं हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है कि टॉप 1% के पास मोबाइल भी है और उसके पास 5 गैजेट हैं और वो दुनिया का माइकल लाल है और फला। नहीं 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 नहीं, वी हैव टू गो फ्रॉम द लोएस्ट। इफ द लोएस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन गाँव, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द गाँव, वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। लाइट नहीं आती दिन में 12-13 घंटे, पानी दिन में 3, अभी सबसे पिछड़ा हुआ गांव में आता है वो, और 3 दिन में 1 बार नल आता है, 1 बार। पानी की इतनी भयानक प्रॉब्लम है, फोन ज्यादातर लोगों के पास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, वेरी अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी। वो बहुत सारे, उसमें से लोग 80% कहते हैं, 80 करोड़ कहते हैं हमारी गवर्नमेंट, उसमें 80% लोग होंगे जो राशन देते होंगे फ्री का, बट दे स्टिल हैव एटलीस्ट 1 phone per family. So it is very unstructured. So you can't say that you are developed. हाँ, टेक्नोलॉजी पहुंच गई, हाँ पहुंच गई है, लेकिन अभी वो इतना फायदा नहीं उठा रही। So we are far away. But yes, we can reach it. But ये कि effort चाहिए उसके लिए। That's the only thing. बच्चे क्या कर सकते हैं? All these young kids, 20-21 year old. कुछ लोग मैम आपके स्टूडेंट बनेंगे 4 में, कुछ मेरे कॉलेज जाएंगे SP Jain, कुछ लोग IIMs के अंदर पढ़ रहे होंगे। उनके लिए क्या एडवाइस है? क्या? The only thing, because I am born and brought up by IIT Delhi. And my PhD was with IIT. My husband is on IIT. And IIT देखा है. Don't be selfish.
You really have to think for the society. It really breaks my heart. I still remember this when I was doing PhD. I was writing my thesis and I had all these top 50 जो बच्चे आते हैं IT के BTechs, top 50 rank. And they were only discussing हमारा career ही होना चाहिए, यार यहाँ जाएंगे IIM करेंगे तो वो हो जाएगा, अमेरिका जाएंगे तो वो हो जाएगा. I was like, they don't even care what is happening. And then they superficially comes after 20 years and then they start talking. This should be there from the very beginning. Very, very beginning. The first thing is your house. मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछती हूँ, घर का क्या काम करते हो? I do ask this question in the admission process कि आज तुमने घर का क्या काम किया? मैं सब कर लेता हूँ नहीं है, करता हूँ अगर लड़का है. There's a difference between the two. Great. There's a huge difference between the two. Good, it starts at home. Of course, it starts from home. आप अपने घर से शुरू होता है. अपने घर से शुरू होता है. This is what it is. आप अपने घर का अगर बिस्तर नहीं उठा के दे सकते हैं, तो आप ज्ञान बांटने के लायक नहीं हैं. That's so amazing. I mean, how these guys can use technology right now? Social media, Facebook. देखिए, Instagram, the world. not Apart only from watching the reels. creating a nice content is also a very good contribution. Yeah. Creating a nice content, making people aware of what is happening in the surrounding is a very beautiful, whatever your subject is favorite. It can be history, it can be political science, it can be social, anything that you want. If you're creating a content, start creating a content with that. It's a very good start. Why? उसमें आपका जो नेटवर्क है उसमें वो बात फैलती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, क्या है, हम झूठे झूठे व्हाट्सएप को हम मान लेते हैं. द मोमेंट यू गोना स्टार्ट रेजिंग, इट्स नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, इट्स अ टू वे. आपका सेकंड आना चाहिए. अगर आप वहां से शुरू करेंगे, it doesn't matter, you don't reach 500,000 or may 5 million or whatever. It can be 500 also. Yeah. Not only this, it helps you in your image building also. Yeah. कि कम से कम इनसे हम इस चीज़ में बात नहीं है. तो मुझसे लोग अब बात नहीं करते ज़्यादा कम्युनलिज्म की या वुमेन एम्पावरमेंट की. So they know that what my views are. So this is a very good way of projecting yourself as well. So I do teach a seminar when I talk about how to project yourself as a personality on social media. The brand you. The brand you, which is called digital self. How do you present yourself? Oh wow. मैं क्यों नहीं बताऊं सबको कि मैं 10 किलोमीटर भी दौड़ लेती हूँ. मैं क्यों ना बताऊं कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ. कैसे बताऊंगी? वो इमेज तभी तो जाएगी जब मेरा कोई पोस्ट जाएगा, जब मेरे वाले कोई बात जाएगी. Super. It only come like that only. So अपना एक persona, मैं भी इनको बोलता हूँ, कुछ भी हो, you want to give stock market tips, whatever you've learned, just start giving it out. Best way to start learning is start teaching. Teaching, perfect. बिल्कुल well said. I completely agree. और कुछ comments आएंगे, then you improve in the entire journey. नहीं, उसमें पर आपको बहुत बाद में शर्म भी आती है कि हाय राम, हम कितना बन मैंने रहे क्या थे कर दिया, ये मैं तो बिल्कुल भी, मुझे कुछ नहीं आता था. दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग. जब पता चलता ना कि हाय राम, मैं कितना बन रहा था या मैं कितना बन रही थी उस टाइम, कि मैं ये हूँ, मैं वो, मैं ऐसा. इवन हो सकता है आफ्टर फ्यू इयर्स जब मैं ये इंटरव्यू देखूंगी तो मुझे खुद अपने बारे में ये लगेगा कि हे राम, मैं क्या बोल रही थी. आई वुड हैव डन बेटर. नहीं, मैं तब इतनी नहीं थी. अब नाउ आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन समथिंग लाइक दैट. सो इट्स एन ऑनगोइंग थिंग. So digitization is the way forward. Thank you so much, ma'am. It was such a great experience. Boys and girls, do drop in a comment. What do you guys think about this conversation? तुम्हें क्या लगता है भाई? What kind of impact you guys can bring in? What I'm going to do is I'm going to pick up one of the best ideas and I'm going to share with Tripathi ma'am as well. And I'll send you one of my best books जो अपना idea बताएगा कि how we can use digitization to impact or bring a bigger impact in the Indian system. Women empowerment or man empowerment as well. Both of these. No, human empowerment. Human empowerment. और कमेंट करके बताइएगा आपके क्या आइडियाज हैं और वीडियो को लाइक पक्का करिएगा. One of the best ones get one of my favorite books. और नहीं तो मैम आप स्पॉन्सर करेंगे वो बुक. चलेगा. This is so amazing. Thank you so much for watching, guys. See you in the comment section. Bye bye.